Hello, hello, check. Hello, hello, check. Hello, my check. Hello. If your registrations are pending, I kindly request everyone to complete it. Hello. To everyone present here, I kindly request to do the registration if it is pending, and also please silence your smartphones.
I again announce to complete the registration if it is pending, and please silence your smartphones.
kindly request everyone to complete registration and silence their smartphones. I kindly request everyone to maintain the decorum of the hall and kindly switch their phones off. Please maintain the decorum of the class.
With a huge round of applause, please welcome all our dignitaries. Good afternoon, everyone. On behalf of the Gujarat Council on Science and Technology, GUJCOST, Gandhinagar and Kari Sarva Vishwavidyalaya, KSV, Gandhinagar, I extend my heartfelt welcome to each one of you to the second session of the special initiative Let's Talk IP, organized by GUJCOST in collaboration with National Intellectual Property Awareness Mission, NIPAM, Intellectual Property Office, New Delhi. Our previous session of Let's Talk IP, held on the occasion of National Youth Day on 12th January 2026 at Gujarat Biotechnological University, received an overwhelming response and highly positive feedback from thousands of participants across the country. Building on that remarkable success, for today's program, we are joined by thousands of participants across the country, and it is being streamed live on the GUJCOST YouTube channel and is also accessible via Google Meet for the convenience of all participants. May I kindly request everyone to be comfortably seated as we begin the formal proceedings. We are truly honored to have with us our esteemed dignitaries whose presence adds immense value to this occasion. Dr. Abhishek Singh Sir, Examiner of Patents and Designs at the Indian Patent Office, Delhi, Government of India. Mr. Mahesh Patel Sir, Scientist G, National Innovation Foundation, India. Dr. Narottam Sahu Sir, Advisor, Gujarat Council on Science and Technology, GUJCOST, Department of Science and Technology, Government of Gujarat. Dr. Poonam Bhargava Ma'am, Principal Scientific Officer, Gujarat Council on Science and Technology, GUJCOST, Department of Science and Technology, Government of Gujarat. Dr. Gargi Rajpara Ma'am, In Charge Director, Kari Sarva Vishwavidyalaya. Dr. Divyang Dave Sir, Principal, K. Piper KSV. To begin this auspicious event, let us seek the blessings of Goddess Saraswati, the embodiment of knowledge, wisdom, and learning for a meaningful and successful session. I request everyone to please stand and join us for the prayer.
mark the commencement of this enriching event, we now invite our esteemed dignitaries to be welcomed with floral bouquets as a heartfelt gesture of respect and a symbol of our shared commitment to fostering innovation and advancing intellectual property awareness. To begin with, I'd like to invite Dr. Narottam Sahu sir to welcome Dr. Abhishek Singh sir. I again request Dr. Narottam Sahu sir to honor Mr. Mahesh Patel sir with a warm gesture of welcome. Now I invite Dr. Poonam Bhargava ma'am to felicitate Dr. Gargi Raja ma'am. Now, I again request Dr. Poonam Bhargava ma'am to honor Dr. Divyang Dave sir with a warm gesture of welcome. Now, I request Dr. Gargi Raja ma'am to felicitate Dr. Narottam Sahu sir. Now, I request Dr. Puneet Parejia sir to felicitate Dr. Poonam Bhargava ma'am. I kindly request all dignitaries to step down from the dais and take their seats as we gracefully move forward with the next part of the program. Today, we also celebrate International Day of Women and Girls in Science. To begin our program, let's take a short glimpse about previous session of Let's Talk IPR and celebrate the spirit, dedication, and achievements of women and girls who are strengthening the foundations of science, technology, and innovation by a short video. I request our IT team to play the video. I thank Mr. Devansh for this beautiful glimpse and thank you to our IT team. To give the opening remarks, we are privileged to have with us Dr. Narottam Sahu sir, the advisor GUJCOST, a distinguished scientist and science educator dedicated to community science outreach. Dr. Narottam Sahu sir has been at the forefront of several initiatives aimed at advancing scientific knowledge and innovative excellence in our state.
With a huge round of applause, we welcome on stage Dr. Viksit Bharat to say a few exciting words. Thank you so much. So today is the day to celebrate the success and the great achievements of our distinguished women scientists and girl students, and we are very much delighted to be here in this very auspicious campus of Kadi Sarva Vishwavidyalaya. Thanks to our respected President Sir, Provost Ma'am, all the dignitaries, heads of the Department Director of this particular KB Institute of Pharmaceutical Sciences, all the faculties of BBA and all the heads of the department, my colleagues on the GUJCOST, our PIC team, and all our coordinators of IP cells, IP labs, and all other participants, distinguished members and delegates, those who are also participating in this program on the virtual platform. So it's a great day to have some sort of celebration, some sort of discussion, and there is a point which is coming what to discuss. So let us discuss. Let us talk something very important, something very significant, something related to our career, future, or something related to our nation or state, or something related to our next generation, to showcase how important our work is and how we are going to take care of our people as well as the planet. So this is a program, Let's Talk IP. It was designed by our IP cells, PIC department of GUJCOST, and which is going to bind every youth, not only in the state, in all our state aesthetic councils all across the country. This program, which when it was conceptualized, it was received that wings with a wider participation and broader outreach with our patent office of Government of India. So we are grateful to Professor Dr. Unnat Pandit sir, who is the Controller General of Patent Design, Trademark, and all this Baudik Sampada. So in the Government of India, he is so generous and so kind and so concerned about these types of programs and activities. Sir has immediately led us to make it a very broader concept and to allow it not only the students, those who are in that particular campus, but to have the chance that where the other students and the faculties, they can also to be a part of that thing. And just to give them, it is not like a simply participation. For your participation and your discussion, you are not only getting the knowledge that has to be shared by your esteemed faculties here, but you will be also every participant, registered participant here, whether in the physical mode or in the online mode. So they are receiving a beautiful certificate. It is in the format just like you are receiving another patent. So anybody of you are seeing the patent certificate कैसा दिखता है आप लोगों को किसी को मालूम है? So your certificate is like that one. So your patent for participating this program. That I was so thrilled to see that draft by our Abhishek Singh साहब जो दिखाया अभी. मुझे तो लग रहा है कि पहले हम लोगों की हमारा ऑफिस में भी इसको हमारा टीम को बताता हूँ, आप इनको फ्रेम करके लगा दीजिए. ओके, पेटेंट तो हम लोग नहीं ले पाए हमारे कैरियर में, एटलीस्ट पेटेंट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट वी कैन टेक दैट वन. थैंक यू सो मच अभिषेक. सो दिस इज ए वेरी गुड प्रोग्राम. तो ये लेट्स टॉक आईपी, इट्स जस्ट लाइक द टाइटल इट इज कंसर्न, इट्स ए वेरी यूथ मूवमेंट रिलेटेड ए प्रोग्राम. यूथ को कैसे हम लोगों को करना ही है. जैसे ऑनरेबल पीएम साहब का मन की बात सुना होगा, हाउ इंस्पायरिंग दैट वाज. कोई छोटा सा टॉपिक होगा, बट इट हैज टू टेक ए नेशनल, स्टेट एंड नेशनल कंसर्न. Similarly, suppose we are here 300 students, teachers, faculties,
okay, from different discipline, different institution maybe, and we are having 7,000, 8,000 plus participants all across the country. They were listening to this program through online platform. So let us discuss something like any particular topic, title, issue, concern, and have some sort of creativity from that things. Okay, जैसे बच्चे क्लास में इनके जो एक्टिविटी क्लास होता है वहाँ पे बेस्ट वेस्ट ऑफ आउट ऑफ वेस्ट जो करते हैं, so let us discuss something and get something measurable, something noticeable, something recordable, something patentable, like that way. So that the things, and as our nation is marching ahead with youth power, as our honorable Prime Minister as well as our honorable Chief Minister is also targeting lots of programs, youth related programs for the next generation. So let us join in that movement and bring something best. Okay, as a person and as an individual, I may or may not be having that type of variety ideas, but when we are sitting together, when we are discussing together over a cup of tea or in our recreation or in our zero then we can bring some sort of miracles. So that was the spirit of things. So how simply, how to bring that very abstract term like a patent, copyright, design, this trade, that trade secrets in a very common talk. So this talk in our home, in our breakfast table or in our dining table, so that whatever the mummy has prepared, so we can also help that mummy also. Our mother is also another innovator. She has to bring that much of recipe or this, that vegetable, that the particular favorites a dish for you or something family members. So let us appreciate that spirit also, that contributions also. So everything from household to our neighbors, our society, our village or town or taluka, district, state, everything when we are going to there. So IP has a record for that thing. Suppose हमारा गांव में, हमारा स्टेट में, हमारा एरिया में something is very noticeable, something arts है, something खाने की चीज़ होता है, something कोई कपड़ा का चीज़ होता है, कोई एम्ब्रॉयडरी होता है, कोई some sort of agriculture product होता है. So we have a very particular designation for that thing, that is called geographical indication. आपको केसर करी मालूम होगा ना? तो केसर करी ये GI टैग लगा हुआ है. अभी लास्ट ईयर में हम लोगों को गुजकोस्ट की तरफ से हम लोग को गुजरात का तीसरा जो फल है, फ्रूट्स है, केसर करी नंबर 1, नंबर 2 था हमारा भुज का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके इनका सारा हिस्ट्री निकाल करके इनका कल्टीवेशन एवरीथिंग करके हम लोग लास्ट ईयर हमको मिला. तो ऐसे तरीके से देखेंगे गुजरात में कितना चीज़ होता है. हम लोग को इसको एज ए सिटीजन, कंसर्न सिटीजन ऑफ गुजरात, और सपोज आपका तालुका है, डिस्ट्रिक्ट होता है, सपोज कोई आप जाते हैं तो वो करना है इसका
तो ये लोग खेडूत हो सकता है, आर्टिसन हो सकता है, कोई गांव का बहन लोग होता है, तो ये लोगों के पास कोई आइडिया को लेकर के दे हैव टू हैव देयर पेटेंट, ओके, कॉपीराइट, डिजाइन, ये सारा चीज़ होते हैं। ब्यूटीफुल फाब लैब वहाँ पे है, आप लोग कभी चांस मिलता है तो आप देखेंगे। तो सर आपको नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का जो दुनिया है वो तक आपको ले जाएंगे। तो ऐसा दिखेंगे तो फिर हमको लगेगा कि ये इससे फुल फेल्ड है। एक हमारा गांधीनगर के पास में है, यहाँ पे क्या क्या काम होता है, हाउ वी हैव टू टेक द मैक्सिमम बेनिफिट। प्रेसिडेंट सर फॉर गिविंग अस दैट परमिशन और होस्टिंग दिस प्रोग्राम। Our sincere thanks and regards to Gargi ma'am, the provost of this university, who is so cordial and so encouraging, so that ma'am का time यहाँ पे काफ़ी time दिया हुआ है। And ma'am, this is the second talk, and this talk is going live streaming with thousands of students all across the state as well as the country. So it would be have some sort of impact. And as today the entire country is celebrating this day for our girls and women scientists, I think this particular talk has added value additions and the beauty of that program. So with these words, I once again congratulate all the participants here, those who are participating this program in a physical format, and those thousands of our participant coordinators, teachers, and our school kids also in our IP lab and innovation labs in all districts and on the state as well as the other parts of the state, parts of the country, who are participating this program also. So slowly and very consistently we have to create that type of a group where the time will be coming that everybody will talk on IP. Thank you very much. Thank you for your encouraging words, Dr. Narottam Sahu, sir. We move on to a very exciting session on our today's topic, From Ideas to Patents, the Innovation Journey. We have with us Dr. Abhishek Singh, sir, currently working as an examiner of patents and designs at the Indian Patent Office, Delhi, Government of India. Sir holds a PhD from Nanyang Technological University, NTU, Singapore, a master's degree from IIT Bombay, and a bachelor's degree from the University of Delhi. He is actively involved in IPR awareness and outreach programs, including delivering training sessions for students, researchers, and innovators, and is associated with the internship cell of the Indian Patent Office for capacity building and promotion of IPR awareness. With a huge round of applause, please welcome Dr. Abhishek Singh, sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन, केम छो? मुझे इतना ही गुजराती आता है, वो तारक मेहता देख के सीखा है मैंने। सो दिस इज अ पोस्ट लंच सेशन, सो सब लोग थोड़ा बहुत स्लीपी फील करते ही हैं, आई नो। एम आई अलाउड टू यूज दिस मच हिंदी? फाइन, राइट? ओके, सो सब लोग थोड़ा बहुत स्लीपी फील करते ही हैं। Is it fine? At the back, am I audible? Okay, सब लोग थोड़ा बहुत sleepy feel करते ही हैं. So I can see a lot of students out there. I don't know whether all are from university or some are school kids also. But back then in my bachelor's, some 10-12 years back, we never heard this term patent or trademark. Itna frequently we never heard.
And when I came here this afternoon, I could see banners over there, which shows that you guys are lucky in a sense that आप लोगों को सुनने को तो मिल रहा है. We were not that much lucky. On a second note, I also feel that you guys are slightly hardworking, interested also. So a big, huge round of applause for yourself. आप सबकी नींद खुल गई होगी, अब सेशन स्टार्ट करते हैं. So I'll be operating the slides from here only. If you have any questions in between, आप हाथ ऊपर कर सकते हैं. We'll entertain at that moment also. Otherwise, session के बाद में we can have 5-10 मिनट का question आया, तो उधर भी हम लोग question answer ले सकते हैं. Alright? So my name is Dr. Abhishek Singh. I'm an examiner of patents and. So I would like to first thank GUJCOST for having me as a representative from the Parent Office, Delhi. It is indeed an honor to speak with these young minds and also other professors and senior researchers here. So this talk series, we are going to talk about IP, and in particular, we are going to talk about ideas to patents and how to protect your innovation. Let's begin our talk for today. So, just a moment. Okay. So let's begin with a very fundamental question. What is an idea? Can someone please tell what is an idea? Idea क्या होता है? Basic language में idea क्या होता है? किसी को भी पता है? Okay, मैं बता देता हूँ. So idea is something when you find any problem and you have a research gap and you have a solution to that. So this is basic an idea, right? कोई भी एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, दैट इज कॉल्ड सम आइडिया. बट दिस इज जस्ट एन आइडिया, नॉट an innovation, not because you haven't started working upon that, so it is still an idea. So when you make an idea complete into a tangible form, आप उसका कुछ प्रोटोटाइप बनाते हो, आप उसका कोई रियल वर्ल्ड या प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालते हो, then it is called an innovation. So एक इनोवेटर का जो जर्नी होता है आइडिया से लेके इनोवेशन तक, वो डायरेक्ट नहीं हो जाता, बिकॉज बहुत सारे स्टेप्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. So whenever any researcher, any innovator, he goes through a process from idea to innovation, उसको बहुत सारा चीज अपने माइंड में रखना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, he has to do prior art search. Prior art search का मतलब है he has to do and check whether similar invention, similar innovation have been done already. क्योंकि अगर पहले ही हो गया है, then what is the point of doing it again? Number two, he sees the competition in the market regarding that particular innovation, particular product. अगर already बहुत ज़्यादा competition है, so margin बहुत कम है, I won't be able to survive in that competition. So this can be one of the points where he can back out. So that is something that the innovator has to take care of, and he has to be reminded of this. And the last one is market viability. कि मतलब गुजराती भाषा में बोलूँ कि मतलब कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, मैं प्रोडक्ट मार्केट में ला तो रहा हूँ बट उससे मुझे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा. सो दीज आर द थ्री थिंग्स that an innovator or in general any researcher thinks of whenever he plans to move from an idea to an innovation. So let's say आप आइडिया से इनोवेशन की तरफ चले गए हो और आपने एक इनोवेशन कर लिया है. Let please look at the first picture on the left, the guy with this small robot. But somehow it is not visible here. The picture on the very left. So that guy, just assume that he has got an innovation done, but then in the next step he is worried whether his invention can be infringed. कोई और उसको infringe ना कर ले, है ना? कोई same prototype मार्केट में बना के बेच रहा है और उसका नाम और उसके लोगो को यूज कर रहा है. हम लोग तो मार्केट में बहुत देखते हैं कितने टाइप के शूज मिलते हैं. एडिडास, पता नहीं कितने टाइप के एडिडास हैं, कितने टाइप के एडिबास हैं. So these are all the infringement cases that we see regularly in the real world. So this guy would be, he would be very much careful. अरे कोई infringe ना कर ले. So to protect all those infringements, there comes the intellectual property rights. So next slide, I'll be talking about that. So there are 5 basic kinds of intellectual property rights. Here you can see patent, geographical indication. I'll be briefly touching upon that. So patents, what is a patent? कि
कोई भी आपका एक प्रोडक्ट है या प्रोसेस है जो उसका फंक्शनल एस्पेक्ट है. I'll give you an example. For example, there was a COVID vaccine that was developed a few years back, or maybe let's say for example a paracetamol tablet. So all these do some functions inside your body, and just because they do a particular function, they have been given a patent. So patent is given for the functional aspect of a product or a process. Is it clear? Next one, design. We all have seen a Coca-Cola bottle, right? That comes in a very particular shape. वो कांच वाला bottle. So that design itself says, अरे ये तो Coca-Cola का bottle है ना. So Coca-Cola has, taken protection for that particular design, and that design aspect comes under the design protection. Next is copyright. Copyright basically, literary या artistic works के लिए होता है. सबसे simple कि YouTube पे हम गाने सुनते हैं, YouTube पे हम वीडियोस देखते हैं, तो कभी आपने सुना होगा कि टी सीरीज ने दूसरे किसी पर कॉपी स्ट्राइक कर दिया, कॉपीराइट स्ट्राइक कर दिया. So because all that has been coming under the domain of T series or that particular production company. So this is called copyright. Next one is trademark. We all go to different restaurants. Let's say हम McDonald's जाते हैं, Domino's जाते हैं, KFC's या और भी बहुत सारे outlets आते हैं. सभी का एक specific logo आपने देखा होगा या किसी की एक tagline होती है. So those logos, those taglines, those brands name, they all are protected under the trademark protection. So अगर उसको कोई भी use करता है without उनके permission के, so they can be sued upon in a court of law. The last one is geographical indication. I think sir talked about it in the beginning itself. Geographical indication. So it is actually about the agriculture products or a particular craft or a particular let's say animal or a food product that comes from a specific geographical origin, जो एक particular geography को identify या फिर उसके बारे में बताती है. For example, कच्छ. So that is why this all comes under the geographical protection. All right. Yes. So this is the next slide. This is a Nokia mobile phone. I'm not sure the younger people in the audience whether they might have seen it or not. But 10-15 साल पहले जब smartphones आए थे तब इस type के phones आते थे. So this phone has some keys over there. I don't know whether it's properly visible or not. So इधर keys भी होते थे. So this particular phones you can see they have different kinds of IPRs. For example, जो name है Nokia, that is protected under the trademark. So you see कि Nokia वाला ही Nokia use कर सकता है. आपने और उसके fake names सुने होंगे कि Nokia की जगह Nokta कर देते थे, वो I को T कर देते थे. So that is all infringement in a sense. Next is आप इधर design भी देखोगे कि जो उसका कैमरा है वो particular angle पे लगाया है. जो ईयरफोन के जैक का पोर्ट होता है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे है, जो उसके कर्व डिजाइन है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे है, चार्जिंग का जो पोर्ट है वो एक पर्टिकुलर साइज का है, टाइप सी है, टाइप बी है या कोई पुराना टाइप है. सो दिस ऑल कम्स अंडर द डिजाइन एंड जस्ट टू टेल यू ऑल दिस वर प्रोटेक्टेड बाय नोकिया इटसेल्फ. थर्ड वन इज पैटेंट. अब आपने सुना होगा कि आईफोन के पास अपना अलग से एक सॉफ्टवेयर होता है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड एंड्रॉइड फोन्स का अलग से एक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर होता है. तो लाइक दैट नोकिया आल्सो यूज्ड टू हैव इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम या उसके डेटा प्रोसेसिंग के कुछ मेथड्स थे. सो ऑल दोज थिंग्स दे वर प्रोटेक्टेड अंडर द पैटेंट्स बिकॉज दे डिफाइन द फंक्शन ऑफ द मोबाइल, राइट. द लास्ट वन इज द कॉपीराइट. एक नोकिया का बड़ा फेमस सा एक जब आप फोन ऑन करते होगे तो एक ट्यून आता था, पता नहीं तो एयरटेल का है बट समथिंग लाइक दैट. So all these were protected under the copyright. So this was just to give you an example of how different IPRs are protecting a particular product. And ये कोई बाहर चंद्रमा पे या किसी और planet पे नहीं हो रहा है, ये हमारे साथ में हम जो products daily life में use करते हैं उनके साथ ही हो रहा है. So this tells you the importance कि IPR के बारे में पता होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, right? Next slide please. So this session from now onwards, अभी से क्या हम specifically थोड़ा patents के बारे में बात करेंगे.
because trademarks, GIs, copyrights और designs उनके बारे में sessions हैं, but you'll have sessions in the coming months specifically dedicated to those topics. But अभी we are going to talk about patents only. Next slide please. So इस session को, इस part को actually मैंने दो part में divide किया. Part 1 where we will be talking about basics of patents, and in the next part we will be talking about entire process from drafting to the grant. Next slide please. So yeah, this begins with part 1, basics of patents in India. Next slide please. So yeah, so we'll start with very basic, what I told in the earlier slide कि patent होता क्या है, what is a patent. So patent is basically given for the functional aspect. Remember this word, functional aspect. And design is for, can anyone tell me, design is for? Outer part, exactly. The aesthetic, वो लगता कैसा है बाहर से देखने में कैसा लगता है, so that is design. वो function क्या कर रहा है actually, that is a patent. So design is given, patent is given for the functional part, and once you get a patent, you get exclusive legal right for that particular invention. Next is, this is very important, the second one, your invention. जो भी आप invention करते हो, that must be novel, inventive and industrially applicable. अब इन तीनों words का मतलब क्या है? Novel का मतलब क्या है कि simple भाषा में समझते हैं कि जो भी आपका product है, whatever is your product or whatever is your invention, your process, that should be novel. That means it should not have been done earlier before by anyone. ऐसा नहीं किसी ने कुछ और पहले कर रखा है, आपने सेम कॉपी कर लिया या थोड़ा बहुत चेंज कर लिया. So वैसा करके अगर आप प्रोडक्ट पैटेंट के लिए आओगे पैटेंट ऑफिस में, so that will be rejected straight out. ठीक है? So your product should be novel. Novel का सिंपल मतलब ये है कि कुछ नया होना चाहिए, है ना? दूसरा, इन्वेंटिव होना चाहिए. अब फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट बॉल का एग्जांपल देते हैं, ठीक है? You come with a cricket ball. You have seen a white leather ball, red leather ball. That comes with a pink leather ball. Pink test matches भी होते हैं. अभी कोई आता है कि वो black leather ball invent किया, and then he comes with this idea कि I'm going to get a patent for this, and what is his justification that this ball helps you to play on a snowy surface. So this is a very vague argument कि snowy surface पे आप leather ball से cricket खेल रहे हो. So he trying to somehow clarify कि उसमें कुछ inventive concept है, but whether that inventive concept is solving a real world problem or not, that is something which is considered under inventive step. कि उसमें कुछ technical advancement है या नहीं है, कोई real world problem को एक बेहतर तरीके से वो solve कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा. If it is going to do that, it is considered inventive over the previous literature या previous invention. Otherwise, it is not considered inventive over the prior arts. And the last one is industrially applicable. इसका simple सा मतलब है कि industrially applicable मतलब कि या तो वो industry में use होता हो या फिर वो industry में produce हो सकता हो. अगर इन दोनों में से कोई भी condition वो follow करता है, then it basically clarifies the step, and then it can be moved for the other steps. Last one, जो patent है और इसके बारे में जब हम discuss करते हैं वो Patents Act 1970, which is under the Gadget of Government of India. So सारा इसके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है. Next, why patents matter कि patents हमें लेने क्यों हैं, patents करने क्यों? We discussed about it because it encourages innovation, और innovation से ही आप investment उसमें ला सकते हो. Second, कि वो unauthorized infringements को रोकता है. अनऑथराइज कमर्शियल यूज के आपने प्रोडक्ट बनाया बट उसको एक्सप्लॉइट कोई और कर रहा है, सो इसको भी आप इन अ सेंस रोक सकते हो व्हेन यू गेट अ पैटेंट. एंड लास्ट वन इज टू कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंपेटिटिवनेस. मार्केट में थोड़ा कंपटीशन क्रिएट करने के लिए भी इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ पैटेंट. Okay, legal framework in India. So in India, the patents are governed by Patents Act 1970. So that is, you can say, the law book for patents. Patents Act is being sub-classified, or you can say very specifically, described under the Patent Rules 2003. And in India, this whole framework of Patents Act, it is governed by the Office of Controller General of Patents, Design and Trademarks, जिनका ऑफिस अभी न्यू दिल्ली में है. Next slide, please. Okay, so in the coming couple of slides, I'll be showing you some stats about how the patent filing is going in India from past 5 to 6 years. That will give you a highlight कि इंडिया में patents के regarding चल क्या रहा है, and ये लोग अचानक से इतना IPR क्यों कर रहे हैं.
and please. So this is the data which shows the patent filing from financial year 2019 to financial year 2023. So 5 years का वो data है, and you can see we started with around 56,000 filing back in 2019, and we moved to 92,000. And this year itself, over in this the last financial year, it is around 1,06,000 filing we have already completed. I haven't put the data here, but this year also over 1 lakh filing we have. So means we are having filing which is just increasing over the year. Next slide, please. This is another data which shows the number of patents granted. So earlier we used to grant lesser number of patents because of the many reasons कि पहले तो उतने ज़्यादा patent फाइल नहीं होते थे. दूसरा कि जो process था patents मिलने का, the process was itself very lengthy, very cumbersome. And third, manpower का भी थोड़ा सा issue था. But once the government started focusing on this aspect also, because the government of India's vision is that we want to be a research and a research-driven economy. So once all that narration, all that narrative starts to build up, that give us this output. So financial year 2023 mein we granted over 1 lakh patents. So that in itself was an achievement for India. Next slide, please. Okay, so now we move to what actually matters for most of the people here. कि अगर ये पता होगा तो आप लोग फिर समझ जाएंगे अच्छे से कि कौन फाइल कर सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. So we start very simply, है ना? कुछ समझ में नहीं आया so you can just stop me in between. Who can file a patent in India? So पहले तो Section 6 जो है Patents Act का, the Section 6 of the Patent Act 1970 that governs the whole patent filing. Next, the true and the first inventor of the invention, he has the primary right to file for a patent. If in some case he wants कि मैं नहीं करना चाहता, but he transfer over the right legally to any third party or a second representative, he can also do so. Next, multiple inventors can also file a patent, क्योंकि एक invention में you hardly see कि single inventors वाले invention होते हैं. Generally a team works, right? So वो teams में multiple inventors हो सकते हैं. They can also file a joint application, and there are also joint applicants. Many a times what happens is that you might have heard कि ये industry और academia का collaboration है. तो इंडस्ट्री बोलेगी कि मैं भी एप्लीकेंट हूँ, एकेडमिया कोई यूनिवर्सिटी बोलेगी मैं भी एप्लीकेंट हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरे नाम पे पैटेंट चाहिए, इंडस्ट्री बोलेगी मुझे भी मेरे नाम पे पैटेंट चाहिए. सो दिस इज अ फ्लेक्सिबिलिटी कि मल्टीपल एप्लीकेंट्स आर अलाउड. सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय जॉइंट एप्लीकेंट्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, सो दिस इज अनदर स्लाइड फॉर इंडियन रेसिडेंट्स. बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि वो इंडिया से बाहर फाइलिंग करना चाहते हैं कि अभी इंडिया में तो मैंने प्रोटेक्शन ले लिया, and now I want to move to the US, I want to move to the Europe या किसी और मार्केट में जाना चाहता हूँ, या फिर I don't see a market for my product in India, I directly want to go to some other market. So for that it's absolutely fine, but you have to take prior permission from the patent office before foreign filing, and for that particular permission, Form 25 of which comes under the Schedule 3 of the Patents Act needs to be filed by the Indian resident in that manner. Next slide, please. Yeah. Next is type of applicants that can apply for a patent. So कोई भी natural person हो सकता है, individual, like आप scientist हो या फिर आप कोई researcher हो या any person or any innovator from a industry background. So they can also file. Next is startup. Any recognized national or overseas startup, they can also file a patent application. Any small entity, MSMEs or other industries, they can also file an application. Educational institutes, just like the universities, just like the colleges, they can also file the patents. Then next one is company or the corporate body. As long as you are a registered legal entity, you can file a patent. And last one is the government recognized departments or undertakings. They are also eligible for these filings. Okay. So there are three different kinds of patent applications. One is ordinary, next is conventional, and third is PCT. So ordinary, by the name it suggests, very simple. Ordinary means you are directly filing this application right into one of the offices, right into one of the jurisdictions. Let's say you are filing in India, but उससे पहले वो application आपने किधर भी file नहीं किया. You directly came here
and you directly file here, so it is called an ordinary application. Next one is a conventional application. So now let's say वो application कोई बाहर का, let's say UK का कोई resident है, he filed it in the European Patent Office, and within 12 months of that he files the same application here in Indian Patent Office. So in that case that would be called a convention application. So current filing से 12 months पहले अगर वो कहीं और फाइल कर चुका है, ऐसे application को we call convention application. Last one is the PCT application. So PCT basically stands for Patent Cooperation Treaty. It is just to simplify the process कि if any inventor, if any innovator sees कि मेरे product का market बहुत सारे countries में है ना? So instead of applying this country, this country, this country, this country, I just see one point of contact. मैं उधर एक application file करता हूँ, and from that itself कि मैं आप choose करता हूँ कि मुझे UK में जाना है, मुझे EPO में जाना है, मुझे जापान में जाना है, US में है, then it automatically gets transferred. So you don't need to take that burden of applying separately. Are you getting it? So it basically helps you channelize automatically and just to smooth the process. We'll talk about it in slight detail in the coming slides. Next slide, please. Okay, next is type of patent specifications for an ordinary application. Next slide. So there are two kinds of specifications. One is provisional, another one is complete specification. Those of you who know patents, like Mr. Moin, he's a patent agent, so they must be knowing very well about it, that like what is provisional, what is complete specification. So provisional specification is something that helps you when your idea is still in a development stage. जब आपको लगता है कि यार मेरा आइडिया अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, तो मैं अभी कंफ्यूज्ड हूँ कि लाइक इसको मैं कंप्लीट करूँ या नहीं करूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता कि इस प्रोडक्ट का मार्केट आगे होगा या नहीं होगा. नंबर 2, मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई और कंपेटिटर सेम प्रोडक्ट या सेम इनोवेशन को मार्केट में लेके आ जाए और उसको पैटेंट मिल जाए. सो बेसिकली व्हेन यू आर कंफ्यूज इन दीज टू थिंग्स, राइट, सो व्हाट यू थिंक कि ठीक है ना, एक प्रोविजनल एप्लीकेशन में फाइल कर देता हूँ तो मुझे कंटिन्यू करना होगा आफ्टर 12 मंथ्स, सो आई कैन कंटिन्यू, इफ नॉट मेरा बाकी मनी तो वेस्ट नहीं होगा. So it basically helps you secure a priority कि इस particular invention के लिए अगर patent मिलेगा या इस particular technology के लिए patent मिलेगा, so then you would be the first जिसको मिलेगा. Okay, so it helps you secure a priority, but in that case within 12 months of filing this provisional application you have to file a complete specification. Next slide please. So the next one is complete specification. So if you are very sure कि my experiments, my data, all is very concrete, and I am ready with all the descriptions, all the prototypes, everything. I'm very confident, so you can directly go ahead with a complete specification. और अगर आपने पहले provisional file कर रखा है, so after 12 months you can come with a complete specification, and after that your next process can start. Please next slide. So yeah, now we are at the part 2. Here we would be learning about the steps from drafting to grant. Next slide please. Yeah. So step first is drafting a patent application in India. So that in itself used to be a very burdensome, very tricky, very tiring work for people some years back. But जब से थोड़ा बहुत AI लोग use करना लग गए हैं, it has become slightly easy, but not as easier as it should be. So I hope कि इस सेशन के बाद थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगेगा कि अरे इतना भी कुछ यूनिक या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. There are particular technicalities to it, but it is something that you can learn with practice, or you can learn while you are in touch with experts. So patent agents basically they help with this process to those who are not very much familiarized with this. Next slide please. So what are the core components of a patent application? जब आप एक draft ready करते हो अपने patent application का, so these are the basic, the top, the 5 things are something that should be there in your patent specification. One is the title, कि आपका जो भी invention है आप उसको एक crisp way में identify कर सकते हो, define कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. So that is something which is a mandate, which is a requirement as per the Indian patent rules. Next is description, कि आपका जो innovation है, आपका जो invention है, उसके बारे में आपको जितना भी आपने thoroughly research किया है, उसको आप practically कैसे implement करोगे, उसके practical embodiments क्या है, उसका prototype क्या है, आपने किस किस चीज़ पर उसकी testing की है, वो सारा data that has to be there in the
description, including the background, including how the gap, the research gap has been filled by the solution that you are providing to a particular problem. Okay, next one and the important one is the claims. So claims are the ones जिसके लिए आपको legally protection मिलेगा. So no matter how much lengthy or how much shorter you draft your description, it is the claims that are going to give you protection for. आप 100 पेज का description बना लो, but आपका claim अगर एक है और वो छोटा claim है, तो आपको उतने के लिए ही protection मिलेगा. So claims basically define the scope of protection for that particular invention. So claims are the most important part of a complete specification. Next one is the abstract. Abstract, as we all know, it just provides a basic summary of the complete invention. Next one is the drawings. Drawings are optional, but in case you feel that your invention can be more justified or explained in a very simpler manner, so you can use drawings to that as well. And last ones are provisional and complete specification. So provisional, as I told earlier, you have 12-month period to convert it into a complete specification. So provisional ki case mein, if claims are there, you can add claims, or if claims are not ready by that time, claims are optional for that matter. Another one, complete specification. The name itself suggests complete specification, तो वहाँ पे claims होने ही चाहिए. Also, just remember, provisional में आपने एक बार claims अगर दिए, if you have defined the claims, उसका scope आपने define कर दिया, then in the complete specification, वो scope के बाहर आप कोई नया claim add नहीं कर सकते हो. एक बार आपने define कर दिया कि let's say, I'm giving you a very rough example कि this invention is going to be about the tire of a motorcycle, then it has to be about the tire of a motorcycle only, not about the engine, not about the brakes. It has to be about the tire only. So that is something which limits you in a sense, and which has to be kept in mind while you go from provisional to complete specification. Next slide, please. Okay, now we move to step 2. Step 2 basically tells you about how to file the application. So simple. First is you have to file what we call as form 1. So form 1 has the basic details of yours, like which category of applicant you are. Are you a natural person? Are you an educational institute, small entity, or any overseas entity, or something like that. So these all things are covered under form 1. Form 2 is basically where you are describing whether the specification is a provisional or a complete specification. Next step, there are supporting documents to it, as I told earlier. So drawings, if there are any disclosure statements are there, and other documents about which I will talk in the next slide, declaring the inventorship or supporting the category of the applicant. Next is the fees. So as some of you might be knowing that there is a fee structure, and there is a difference in the fee structure as per the category of the applicant. For example, if you are a natural person, the amount of fees that you need to file, that you need to pay for filing an application or for requesting an examination for an application are different for an educational institute. अगर आप educational institute हो तो आपको fees कम देना पड़ता है as compared to a natural person. So that is why it becomes important कि आप अपनी कैटेगरी जो है वो फॉर्म 1 में मेंशन करें, और उसके साथ जो उसका प्रूफ है कि इट इज सर्टिफाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडी और फ्रॉम a registered entity that you are falling under a particular category. Last one is filing method. So filing can be done through the IPO portal, and physical filing is also an option, but that is very limited and in a very certain conditions only. Next slide. Okay, so these are the forms that I was talking about. So form 1 is clear. It gives information, basic information about the applicant. Form 2, it should be either a provisional or a complete specification. Then comes the form 3, which talks about sorry, the statement and the undertaking. So it deals with whether you are making any foreign applications regarding this particular corresponding application or not. So if you are filing any foreign applications, you have to submit a form 3 giving all the details. कि कहाँ पे file किया है, उसका current status क्या है, whether it has been published, it has been granted, or it has been revoked, or it has been cancelled. Next is form 5. So
it is mandatory in case you file a provisional application first. अगर आप provisional करते हो then you have to give a declaration of the inventorship कि आपको बताना पड़ेगा अलग से कि ये इस particular invention के लिए inventors हैं. For that we have form 5. Next is form 26. If you are taking help of any attorney or a patent agent or any registered authority for that matter, so you need to file form 26 and you have to give a stamp duty for that, saying that this particular person is a registered and a higher authority and he will act on the behalf of the applicant for all the matters that are relating to this particular application. For that we have form 26. And last one is the form 28. So this is for claiming the status of a small entity, educational institute and a startup. तो अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में आते हो, it becomes mandatory for you to come up and file a form 28. And along with that, you have to show a proof कि मैं इस कैटेगरी में आता हूँ. For example, if you are falling under an MSME category or a startup category, so government portals पे जाकर आप वो certificate download कर सकते हो. And then because that certificate is legally authorized by the government of India's different ministries and different departments, तो वो आप डाउनलोड करो और उसमें एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम भी होता है कि वो 10 years के लिए वैलिड है या 5 years के लिए वैलिड है. तो उस पर्टिकुलर डेटा के साथ आप उसको सबमिट कर दो and that has to be verified again by the patent office. So if all these conditions are met, then you can move to the next step. Next slide please. So this is our next step. So now until now what we know is that हमें फाइलिंग हमें ड्राफ्टिंग समझ आ गया एवरीवन. हमें समझ आ गया कि फाइलिंग कैसे करनी है, कौन कौन से फॉर्म्स देने हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं बट दीज आर द बेसिक फॉर्म्स एंड आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली फॉर पीपल फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स उनके लिए ये फॉर्म्स मोर देन इनफ है. इससे ज़्यादा फॉर्म्स की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी. ठीक है, वो सारे फॉर्म्स आपके लिए काम करेंगे. सो फाइलिंग आपको समझ में आ गया. सो वंस योर एप्लीकेशन नाउ इज एट द पेटेंट ऑफिस डेस्क. आप समझो आपने एप्लीकेशन मेरे को दे दिया, अभी एप्लीकेशन मेरे पास है, तो क्या होगा. नेक्स्ट स्टेप इज द ऑटोमेटिक पब्लिकेशन. आपने लेट्स से 1 जनवरी 2026 को मेरे पास एप्लीकेशन भेजा, तो उसके 18 महीने के बाद आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली IPO का जो वेबसाइट है, जो जर्नल है हमारा पब्लिकेशन वाला, वहाँ पे आ जाएगा. इट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू बी देयर विद इन 18 months. नेक्स्ट स्टेप इज एन अर्ली पब्लिकेशन. आप चाहते हो कि जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी, उसका डोमेन है वो इतना जल्दी से चेंज हो रहा है कि मैं 18 महीने वेट ही नहीं कर सकता या वेट ही नहीं कर सकती, है ना. आई वॉन्ट इट टू बी डन इन एक्सपेडिटेड मैनर और फास्ट पेस मैनर. तो आप क्या करो, आप फॉर्म 9 फाइल करो एंड दैट गिव्स यू एन एज ओवर द अदर्स कि आपका पब्लिकेशन जो पहले 18 months में हो रहा था, नाउ इट कैन बी डन विद इन 1 month ओनली. ओके, सो यू सेव दैट एक्स्ट्रा विंडो ऑफ अराउंड 16-17 months. तो अभी 1 महीने में आपका जो एप्लीकेशन फाइल है वो पब्लिश हो जाएगा. बट फॉर दिस फॉर्म 9 यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा फीस. वो उसका अलग फीस होता है. बट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आई एम टेलिंग यू दिस इज अराउंड 2500 रुपीज एट दिस मोमेंट. सो आप 2500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करो एंड अराउंड 1 month और इवन लेसर देन दैट आपका जो एप्लीकेशन है दैट कम्स टू द डेस्क ऑफ अ examiner like me. Okay, next step is the request for examination. There's one important point here. Unless and until you file a request for examination, there would be no examination. जब तक आप examination के लिए form 18 फाइल नहीं करोगे, वो एग्जामिन नहीं होगा. चाहे उसका पब्लिकेशन हो जाए, आपने फॉर्म 9 फाइल कर दिया है तब भी आप फॉर्म 18 फाइल नहीं करोगे, आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे एग्जामिनेशन के लिए, वो एग्जामिन नहीं होगा. So form 18 is also a mandatory form for your patent application to be examined. There is another tweak here कि अगर आप चाहते हो कि हाँ पब्लिकेशन तो अर्ली हो गया मेरा फॉर्म 9 की हेल्प से, बट आई वांट कि एग्जामिनेशन भी जल्दी हो जाए. सो फॉर दैट मैटर वी हैव फॉर्म 18A. फॉर्म 18A, so that helps you to get your application examined in expedited manner. So again इसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा फीस होती है. एंड फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आई बिलीव इट इज 8000 एट द मोमेंट. बट देयर इज अ लिमिटेशन दैट योर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन शुड बी लिमिटेड टू 30 pages एंड योर क्लेम्स शुड बी 10 और लेसर देन दैट. उससे ज़्यादा होंगे तो उसका अलग कुछ प्राइसेस होते हैं दैट वी कैन डिस्कस इन सम अदर टॉक. बट दिस इज द रफ आइडिया ऑफ
how the fees plays a role. So आप expedite examination के लिए भी कर सकते हो. Expedite examination again we have 3 months time कि आपको पता चलेगा कि 3 महीने के अंदर आपका जो एग्जामिनेशन है वो हो जाएगा और आपके पास एग्जामिनेशन के बाद जो भी ऑब्जेक्शंस एग्जामिनर या कंट्रोलर्स व्हाट वी से whatever objections they have they will propose to your table and then you will be able to answer that. Next slide please. Okay, so there's one more step that happens between filing and generation of the this FER, right? So there is pre-grant opposition. Pre-grant opposition in India, it allows any person to oppose a patent application after its publication, but before the grant. So इसका मतलब क्या है कि कोई भी person है, here it is any person, not anyone belonging to a particular industry or a technology. It can be any person. वो आ सकता है, he can tell the patent office, वो एक अपना एक request डाल सकता है, he can submit an objection that this invention due to certain reasons is something which should not be entertained, or it has infringed my work, or it is a duplication of my work, or it is wrongfully obtained, या फिर it is not patentable in certain sense. तो वो अपने जो भी objections हैं वो patent office को submit कर सकता है, and then what patent office usually does is that they pass on these objections to the applicant, and then they wait for the applicant to reply to these objections, and then whatever the conclusion is, the patent office proceeds in that manner. So this is the way that a pre-grant opposition usually happens. It happens, but not that frequently. It happens mostly in case of big industries, not like educational institutes very easily. Yeah. Next slide, please. Then we move to next step, examination process. So as I told कि आपका फाइल अभी मेरे पास आ गया है. आपने चाहे normal examination के request किया हो or either expedited examination. So your file is on my desk now. So what my work is to prepare a list of objections based upon how you draft your claims, how you describe your invention in the complete description, your examples, your figures, everything, your technical objections, your formal objections. So this is my duty to evaluate your invention, your specification on various parameters, and 3 of those important parameters are novelty, inventive step, and industrial applicability. These are the main technical parameters upon which a patent application is examined, and we discussed about it in the earlier slides. I hope you guys are still okay, right? Okay, so yeah, so once I go through your application, I see formal objections there, I see technical objections there. By formal objections means whether you have filed all the required forms like Form 3, Form 9, Form 18, Form 26, Form 28, if they are all required. If not, it's fine. So these are called formal objections. Technical objections means the objections relating directly to the content of a specification. कि मैंने टायर के लिए इन्वेंशन किया है तो वो टायर के रिगार्डिंग कुछ objections, claims से रिगार्डिंग कुछ objections है नहीं. So वो सारे objections we call them technical objections. So both kinds of objections are prepared by the examiner, and upon us there is another layer of safeguarding or looking after this process called the controller layer. So they see whether the objections that are raised by us are in a sense correct or not. So they double check basically what we have raised in the objection list. Next is, now I have passed on my objections to you. So now you can see whatever objection have been raised. आपको लगेगा अच्छा, here said that your claims are very broad, they need to be narrowed down, right? Or you are claiming multiple inventions, or maybe you have not given enough examples so that a normal person will be able to replicate it. These are different conditions which are actually necessary for a patent. You might not be knowing this, but in other sessions, coming sessions, you will be completely knowing about it. I'm just touching upon it. So there are different requirements for a patent specification. So वो सारी conditions अगर आप met करते हो, then everything is fine. Otherwise, there will be objections. So applicant must respond generally within 6 months. कि नहीं सर, आपने जो ऑब्जेक्शन लगाया है ना वो बड़ा बायस टाइप का है, मेरे हिसाब से ये ठीक है, बट इससे काम नहीं चलेगा. यू हैव टू गिव प्रॉपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन सपोर्टेड बाय लिटरेचर कि नहीं सर दिस इज लाइक दिस, और इफ यू थिंक द ऑब्जेक्शन इज वैलिड, सो यू मस्ट एड्रेस दोज ऑब्जेक्शंस.
and for that you have 6 months of time which can be extendable by paying some extra fees. Okay, next is now you have addressed the objections. Now it is for the controller and the examiner to again see कि मैंने जो objections पहले लगाए थे whether they were addressed properly or not. If they are addressed properly, then you are good to go. If not, then there would be a second round of examination. So this is called FER, right? First examination report. So then there would be a subsequent examination report, what we call as SER. So there would be second round of examination done. Then this objection will be given to the applicant again, and then the applicant submits his reply second time. After that, there is no as such examination. Then there would be hearings directly between the applicant and the controller or the examiner for that matter. Now it is between the examiner, controller and the applicant to agree upon whether the objections are maintained or not. Basically it's a negotiation, but a proper legal negotiation, right? This is something which is objectionable, so ये आपको remove करना चाहिए, and the claim should be in a scope, proper scope. So if these are likely to be done, you are good to go in a right manner, otherwise your patent cannot be granted. Okay, so hearing these days is now completely online. Earlier it used to be in a offline or hybrid mode, but these days it is 100% online. So that's why we save a lot of time and space also. So I talked about evaluation criteria. Next slide please. The last step is the grant of the patent. So let's say you met all the criteria, the applicant has met all the criteria, inventive step, novelty, industry applicability and all other necessary criteria, technical, formal. So now all those requirements are met and the patent is granted in section 43. Which section? Section 43. Okay, so now once you are granted a patent, your patent is valid for 20 years from the filing date or priority date. You cannot enjoy a lifetime privilege for that. You have only 20 years. कि 20 साल तक आप आराम से उसको कमर्शलाइज करो, उसको सेल करो, उसको लाइसेंस करो, बट ओनली 20 साल में. 20 साल के बाद वो पब्लिक नॉलेज में आ जाएगा. देन एनीवन कैन मेक यूज, उसको वो बेचे, उस टेक्नोलॉजी को यूज करे, उसको एक्सप्लॉइट करे. देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. बट फॉर 20 years you are the sole proprietor of this. आप उसको लाइसेंस करो, कुछ भी करो, that is up to you. Next one is the maintenance fee. So once you are granted a patent, right, after a couple of years you need to give annual maintenance fee for that patent to be in force. तो अगर आप timely payments करते हो, your patent is active. Otherwise there are going to be some problems. And last one, once you are granted a patent, there would be an official publication in the Patent Office Journal. Next slide please. So this is the timeline, the time frames for the patent filing process from filing to the last step. So if you are filing a provisional application and later you are filing a complete specification, so there is a period of 12 months and this window should strictly be followed. Even if you come 2 days after 12 months, you would not be entertained. Your application is gone. So strictly 12 months timeline should be followed there. Publication. Automatic publication is after 18 months from filing. If you want early publication, it is possible, and the timeline is usually 1 month. And there's another one which is request for examination. So yeah, so I forgot to tell you earlier that you need to file a request for examination within 31 months from the date of filing. 31 months. So this timeline is also strict and non-negotiable. If you come after 31 months, this would not be entertained in any case. Next please. Okay, so this is how the procedure actually looks like on Indian IP India website. So this is the portal where you can start filing your application. So you have to register with it and you need some digitally certified signatures. These signatures are issued by the certifying authorities. Once you do all this process, you move to the next step. You file relevant forms, you pay relevant fees, and you upload necessary documents, and then you can go ahead to the next step. Next slide please. So this is the next slide. So we have our in-house or a made in India tool called InPass. This is a tool that we, or in general the general public, can use for searching of the patents, any patents that has been published or that has been granted before. So this helps the inventors or in general public or your competitors to keep a track कि उस वाले application का क्या हुआ.
whether it has been published or it has been granted or it has not been granted. So you can keep a track using that particular application called InPass. You can check the status of your examination report, and you can also see whether it has been granted or not granted. Next slide, please. So yeah, so this brings me end to this particular part where we talked about the procedure of filing an ordinary application. I have few slides more. I'll quickly talk about PCT application, its filing, and then we would wrap it up. Yeah, next slide, please. So let's say this guy over there is an applicant, right? So he has a patent application and he wants protection, let's say in India. So what he would do is that, can anyone tell me now? I hope. कोई भी तो मैं पानी पीता हूँ. Can we have some volunteer? कोई तो होगा. Okay, this guy wants to get patent in India, so he would directly go and get an. Yes. So what he would do is he simply file an ordinary application. Let's say he wants a protection for the same invention in a different country. Let's say he wants in Europe. So what he would do, he would directly file a convention application in European Patent Office. And the next step is that otherwise he can go through a PCT application. Next slide, please. Yeah. So very, very simple fundamental question. Why would anyone be interested in filing an international application? किसी को international file ही क्यों करना है? Because patent एक territorial right है. Once you get a patent in India, you are bound to get protection only in India, not in any other country. So that is why you or the applicants, they try to file in different countries. Next, please. So what is PCT? PCT is basically a treaty. It is a patent cooperation treaty that is being administered by WIPO, World Intellectual Property Organization. So it basically helps channelize or streamline the process कि आपको अलग-अलग countries में separate application ना करना पड़े. You go through single point application and from there you can just go along the way कि आपको जो countries choose करने हैं आप वहाँ पे चले जाओ. Next slide, please. Yeah, so these are the key stages of PCT application. So you file application at the international application at the receiving office. Let's say you are an Indian applicant and you want to file a PCT application first. So you come to Delhi office or you file through any IP portal. You selected the receiving office at Indian Patent Office, Delhi. So that is your receiving office. So what any examiner at the Delhi Patent Office would do, they would issue a international search report for your application, and based upon that report, right, you can see अच्छा इसमें ये सारे objections हैं. So based upon these objections, should I think upon कि मुझे इस country में apply करना भी है या नहीं करना है. So that kinds of give you an idea कि इस country में apply करना है, ये सारे objections इस country में met हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं. So based upon that, you can go ahead. You can make the national phase entry into different countries. Next slide, please. So yes, so there is also a timeline to this. So day 0 is the international filing day when you file at the receiving office. So usually after 16 months, the office gives you a international search report, जिसके बेस पे आप decide करते हो कि मुझे किसी और country में जाना है या नहीं जाना. After 18 months, आपकी जो application है that gets published. So now anyone in the market can see your application. Or the same criteria as the ordinary application कि आपको 31 months में national fees entry request for examination आपको करना ही पड़ेगा. Next slide, please. Next slide. Yeah. So this was about PCT, and I think I have just a couple of slides also. So these are the inventions which are non-patentable. अभी हमने बात किया कि क्या-क्या patent हो सकता है. So let's quickly understand क्या-क्या patent नहीं भी हो सकता. So section 3 और 4 जो है patent acts का, it talks about the inventions that are not patentable. For example, 3A, anything which is contrary to natural laws cannot be patented. For example, उस दिन एक invention हमारे पास आया था. Someone was telling, sir, ये machine है and it does not require any energy. ये अपने आप चलेगी. So इस type के inventions which are against the natural laws, they fall under 3A, and that's why they cannot be patented. Next is 3B, contrary to public order.
For example, some invention comes कि we are doing human cloning. So this is unethical and it's contrary to public order. So that's why it cannot be patented. Next is 3C कि आपको कोई natural principle या discovery आपने ऐसी चीज की जो already nature में exist करता है. So that cannot be patented because of 3C. Next is 3D. 3D is like already कोई चीज है. For example, there is a particular tablet, paracetamol है, उसका एक particular formula है, but you come with a different salt of it. So in that case, what you did, you came with a new salt. So this mere change in the original invention is something which is objectionable here. Next is 3E कि यहाँ पर let's say मेरे पास 2 tablets हैं, एक paracetamol है, एक ibuprofen है. किसी ने दोनों को मिक्स किया और बोलता है कि मेरा सर दर्द भी ठीक हो गया, मेरे को फीवर भी नहीं आ रहा, तो ये तो वो काम वैसे दोनों अलग भी कर रहे थे ना. So there is no synergy involved in it. So that's why it is bad on the 3E. Next is 3F कि आप 2 multiples चीज़ों को let's say कि आप इसमें एक फैन लिया, एक बल्ब लिया, एक बैटरी लिया, तो अगर मैं सिर्फ इन दोनों को भी लूँगा तभी बल्ब तो जलेगा ही ना, या फैन तो ऑन होगा ही ना. सो इस तरह की कॉम्बिनेशन जहाँ पे सब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं कनेक्शन कॉम्बिनेशन में होने के बाद भी, so these kind of systems are also non-patentable. Next slide please. Next is 3H. जो भी methods of agriculture है कि मतलब मैं इस तरीके से agriculture का process करूँगा कि राइस का जो क्रॉप है वो 6 फीट का हो जाएगा या 10 फीट का हो जाएगा. All these processes they are banned under 3H. Next is 3I which says that medical processes or surgical methods are not inventable. For example, some doctor someday comes up कि I would treat you in such a manner that your kidney stone would be coming out very fastly. So ये सारे methods जो हैं 3I में आते हैं, that's why they are non-patentable. Next is 3J. Any plant part or any animal part as a part or a whole, they are not patentable. Next is 3K, which is mathematical model या business method और computer program per se. म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना होगा, कोई आता है बोलता है कि मैं आपको एक ऐसा टेक्निक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला देता हूँ कि आपको पता लगेगा आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न 10 दिन में डबल हो जाएंगे. ये सारे जो फॉर्मूलाज या एल्गोरिथम्स है ना, as such they are not patentable, so they fall under 3K. Next is 3L which relates to literary or drama music, so these are already protected under copyright, so that's why they are not patentable here. Next is 3M. तो what 3M relates to कि कोई भी आपका मेंटल एक्ट है, गेम खेलने का नया तरीका है, these are all bad here. Next slide. Yeah, last one is 3N. You have a different way of presenting any information and you come up with that and you are asking a patent for that. So this is also something which is non-patentable. Next is topography of integrated circuits. So this has a separate protection under Semiconductor and Integrated Circuit Layout Design Protection Act. So that's why it is not given protection under the patents here. And the last one is traditional knowledge. So traditional knowledge में क्या है कि someone comes up, let's say कि I used haldi in a particular soap and that's why my body's inflammation has gone down. So वो तो हल्दी वैसे भी करती है, उसमें soap का क्या role हुआ? So something which is traditional knowledge, right? And only traditional knowledge used in a different form cannot be patented if it has shown some enhanced or technical advancement over the traditional knowledge, then it can be patented, otherwise it is not. And the last is section 4. Section 4 says that no patent shall be granted in regards to the atomic energy. So this brings me into my presentation. Next slide please. Next slide. Yeah, so quickly I would like to thank Office of CGPDDM which has given me this opportunity to speak here. I would like to thank my office, Delhi Patent Office. I would like to thank GUJCOST and the entire team of GUJCOST, starting from ma'am and sir and everyone here, and also the organizing team in this room and outside this auditorium also. Thank you so much. Yeah. So if you have any questions, ma'am, do we have time? 5 minutes? Or we can maybe discuss after this session also. Yeah. Thank you so much. There was a last slide. That was indeed enlightening. We would now like to invite questions from the audience. If anyone has any question, please feel free to ask. Yes. Sir, you mentioned 2 dates, the publication for the date of filing and second one is almost priority date. Yes. What is the meaning of the
Okay, so usually priority date and publication date they are same, right? Usually they are same, but in case you are having a provisional application, so in that case we call it a priority date. If you directly file a complete a specification, then your priority date and filing date they both are same. Just a name, the difference in the name. Otherwise they are same. To express our heartfelt gratitude, I request Dr. Narottam Sahu sir to present Dr. Abhishek Singh sir with a memento as a token of our appreciation and respect. Thank you, Dr. Abhishek Singh sir. The curiosity does not need to end here. Let it stay our esteemed speaker, Dr. Mahesh Patel sir, one of the senior most scientists. His expertise is in the incubation of innovation-based enterprises, which stands backed by his experience in this domain for more than 2 decades. He is currently leading the Inspire Manam, Million Mind Augmenting National Aspirations and Knowledge Initiative, a flagship program of Government of India aligned with the Startup India, which aims to motivate school students to innovate and pursue a career in science and research. So without any further delay, we welcome Dr. Mahesh Patel sir to deliver his insight on our topic of From Idea to Patents. सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर अभिषेक सिंह ने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें ऑडियंस को दिया है कि जो व्हाट इज़ पेटेंट, हाउ टू डू इट, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स एंड उसकी क्या प्रोसेस है, क्या फीस है, व्हाट आर द काइंड ऑफ ए ऑब्जेक्शन। उसके एक स्टेप मैं आगे भी जाऊंगा कि अब इसको करते कैसे हैं। तो इन फ्यू स्लाइड्स आई विल एक्सप्लेन अबाउट द NIF इन वेरी ब्रीफ इन 2 minutes एंड देन आई विल गो थ्रू वन ऑफ द केस स्टडीज जिसके अंदर एक आइडिया को पेटेंट फाइल करके मार्केट तक लेके गए हैं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, शॉर्ट में इसको NIF इंडिया भी कहते हैं, ये पूरा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है भारत सरकार का, 100% फंडेड बाय DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। NIF इंडिया का यूनिक मैंडेट ये है कि वी आर प्रमोटिंग ग्रासरूट इनोवेशंस एंड यूनिक ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स। तो ग्रासरूट इनोवेशंस क्या है? हमारा जो मिशन है वो टू मेक द इंडिया इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल लीडर इन द फील्ड ऑफ ग्रासरूट इनोवेशंस। ग्रासरूट इनोवेशंस की जो डेफिनेशन, ऐसे तो बहुत है, लोग फ्रूगल इनोवेशन को भी ग्रासरूट इनोवेशंस कहते हैं। हम लोग जिसको ग्रासरूट इनोवेशन जो हमारे मैंडेट में है वो है कि इनोवेशन डन बाय इंडिविजुअल पीपल विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प, सेल्फ ट्रिगर्ड, ऐसे व्यक्ति की जिनकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है या तो कम है, अप टू ड्रॉप आउट, सेमी ड्रॉप आउट्स, अप टू ग्रेजुएट, वी आर कंसिडरिंग द इनोवेटर एज अ ग्रासरूट इनोवेटर्स। और ऐसा इनोवेटर कि जिसने बाहर से कहीं से हेल्प नहीं लिया है। अगर कोई बंदा है जिसने कोई इंडस्ट्री में काम कर लिया, उस चीज़ को करने के लिए उसने ट्रेनिंग एक्वायर कर ली, फिर तो वो आसान से बना लेगा उस चीज़ को, तो हम उसको फिर ग्रासरूट्स की कैटेगरी में नहीं काउंट करते हैं। नेक्स्ट। तो हमारे NIF में अलग अलग डिपार्टमेंट से इस काम को करने के लिए सबसे पहले शुरू होता है स्काउटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। इनका काम है कि पूरे भारत से इस तरह के इनोवेटर्स को ढूंढने के लिए भी हम लोग राउंड द ईयर हमारी एडवर्टाइजमेंट भी आती है। वी हैव अ लाइक माइंडेड पीपल इन डिफरेंट स्टेट ऑफ द इंडिया की जो इस काम में हमें इन लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद हम उसका टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि भाई हमारा कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये अनपढ़े लिखे लोग हैं या 10वीं 12वीं पास से फेल्ड है, तो उनको अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म भर के दे देंगे तो वो नहीं भर पाते हैं। तो हम उनको इतना ही कहते हैं कि भाई आपका नाम, एड्रेस और आपके माइंड में क्या है, आपका इनोवेशन क्या है, उतना लिख के भेज दो हमें। देन आवर रोल स्टार्ट्स। फिर हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है वो उसके पास जाता है और उसको टेक्निकली डॉक्यूमेंट करता है कि ही और सी ने क्या नया किया है, और उसका राइटअप करके फिर हमारे पास आता है। फिर उसका हम लोग
प्रायर आर्ट करते हैं कि भाई ये जो आइडिया हमारे पास आया उस तरह की चीज़ मार्केट में और ये आईपी वेबसाइट पे और इनोवेशन फील्ड में है या नहीं है। तो फिर अगर उसमें नॉवेल्टी एस्टैब्लिश होती है तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और उसका एक यूनिक नंबर जनरेट होता है। हमारा एनआईएफ का एक मैंडेट ये भी है कि एक नेशनल रजिस्टर ऑफ इनोवेशंस बनाना फॉर ग्रासरूट इनोवेटर्स। फिर अगर एक बार एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके ऊपर हम वैल्यू एडिशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट का काम आगे करते हैं कि उस आइडिया को मार्केट तक ले जाने के लिए रिसर्च करके एक वैल्यू एड करके एक प्रोडक्ट तक लाया जाए। देन उसके बाद डिपार्टमेंट है IPR, जो सिंह साहब ने बताया कि भाई कोई नई चीज़ है तो उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। तो हमारे पास इंटरनल एक टीम है जो IP प्रोटेक्शन का काम करती है। और यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि हम लोग जो भी पेटेंट्स फाइल करते हैं वो इनोवेटर के नाम से करते हैं। हम एनआईएफ का नाम एज ए एप्लीकेंट नहीं होता है इसके अंदर। तो जो भी सारी IPR प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ है वो इनोवेटर के नाम पे ही है। वी विल बियर ऑल द कॉस्ट फॉर द IP प्रोटेक्शन। देन फिर बिजनेस डेवलपमेंट कि भाई इसको मार्केट में ले जाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना, इनोवेटर खुद अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसको हेल्प करना, वो सारी काम हमारा बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करता है। देन डिसेमिनेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मार्केट में भी चली गई लेकिन पब्लिक तक एंड यूजर्स तक कैसे पहुँचे। तो डिफ्यूजन एंड डिसेमिनेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द टोटल इंक्यूबेशन चेन। तो DSD जो हमारा डिवीज़न है वो इस काम को करता है। देन आता है कि भाई पब्लिकेशन एंड कम्युनिकेशन, इसके बारे में जर्नल्स में लिखना। हमारा बाय मंथली मैगजीन है इनोवेशन फ्रंटलाइन, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें लिखते हैं। देन वी ऑल्सो पब्लिश वेरियस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। देन पब्लिक पॉलिसी एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, जो अभी नया डिवीज़न चालू हुआ है, तो हम ये भी करते हैं कि भी एक इनोवेशंस को जिसको एनआईएफ ने हेल्प किया उसकी मार्केट में जाने के बाद, पब्लिक में जाने के बाद उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। कोई ऐसा इनोवेशन है जिसके महिलाओं की ट्रेजरी कम हुई तो वो कितने हद तक हुई, क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ, कमर्शियल एडवांटेज क्या हुआ। तो इम्पैक्ट असेसमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी का ये काम है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स और एक हमारा अलग डिपार्टमेंट है जो प्रोग्राम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है। जैसे इंस्पायर मानक हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, इस तरह से नए नए प्रोग्राम्स जो भी भारत सरकार के या DST के आते हैं उसको भी हम लोग टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दिस आर द ओवरऑल फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ एनआईएफ। नेक्स्ट, ये बेसिक, जैसे मैंने कहा कि एक बार आइडिया आ जाता है तो फिर उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, प्रायर आर्ट करते हैं। एक्सेप्ट हो जाने के बाद फिर वो वैल्यू एडिशंस में जाता है, फिर वो बिजनेस डेवलपमेंट एंड DSD। तो ये पूरी हमारी एक शॉर्ट वैल्यू चेन है। नेक्स्ट, ये सिमिलर शॉर्ट में है कि भाई एक बार एक्सेप्ट हो जाने के बाद टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। हमारी एक एनआईएफ एंट्री करके वी हैव अ टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर जो सेक्शन 8 कंपनी है और उसके अंदर भी हम एज अ स्टार्टअप के माध्यम से उसको आगे ले जाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, दिस इज ए शॉर्ट समरी ऑफ ओवरऑल इंडिया कि हमारे पास अभी तक करीबन 3,75,000 इनोवेशंस एंड यूनिक ट्रेडिशनल नॉलेज का डेटाबेस है जो हमारे रजिस्टर में दर्ज किया गया है। और पूरे भारत से लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट्स अभी तक हमारे पास आ चुके हैं, जिसके अंदर काफ़ी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी है। और हम लोग फोकस करते हैं कि ऐसे एरिया, अनटच एरिया, पहाड़ी एरिया है जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं, टेररिस्ट एरियाज, वहाँ तक भी हमारी टीम जाके उनको स्काउट करती है। क्योंकि वी बिलीव कि भाई जहाँ पे स्ट्रगल ज़्यादा है, जहाँ पे रिसोर्सेज कम है, वहाँ पे इनोवेशंस का स्कोप ज़्यादा है, तो हम लोग वहाँ पे भी फोकस करते हैं। जैसे अंडमान एंड निकोबार हमारा आइलैंड है, वहाँ से भी हमारी पास इनोवेशंस के आइडियाज़ भी आते हैं। नेक्स्ट, हमारे पास ये सब काम करने के लिए एक फैब्रिकेशन लैब है R&D के लिए, जिसमें मैकेनिकल रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई भी आइडियाज़ को हम प्रोटोटाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप उसको पायलट लेवल का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, जिसमें हाईटेक CNC कंप्यूटराइज 3D प्रिंटर लेवल के मशीन्स हमारे पास है। तो वी इनवाइट इनोवेटर एट आवर प्लेस कि भाई आप यहाँ आओ, हमारे इंजीनियर से बात करो और उनके माइंड में जो भी चेंजेस होते हैं वो हम इसमें इम्प्लीमेंट करके प्रोडक्ट में ले जाने का काम करते हैं। ऐसे ही हमारे पास अभी रिसेंटली एक हर्बल एनालिटिकल लैब सेटअप किया है, जिसके अंदर नॉन इंजीनियरिंग इनोवेशंस जो आते हैं हमारे पास उसके ऊपर R&D एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करते हैं। और ये सब काम करने के लिए वी हैव अ टाई अप विद वेरियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशंस लाइक ICMR, IITs
एंड अदर बॉडीज़ के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनोवेशन उनके ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट, ये शॉर्ट समरी है कि अभी तक NIF ने 2001 में चालू हुआ था, 2025 में इसके 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए, अभी ये 26वां साल चल रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने 3,75,000 इनोवेशंस का डेटाबेस है हमारे पास। इस डेटाबेस के अंदर करीबन 1.5 लाख इनोवेशंस हमने ओपन सोर्स कर दिए हैं विद द परमिशन ऑफ द इनोवेटर। एक अलग पोर्टल है जिसके ऊपर कोई भी जाके कोई इनोवेशंस और आइडियाज़ जो है हमारे पास उसको सर्च कर सकते हैं। देन अभी तक हमने काफ़ी सारे लगभग 250 से 300 आइडियाज़ को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है, करीबन 120 टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है। पेटेंट का हमारा बहुत बड़ा काम है, करीबन 1600 पेटेंट्स हमने इनोवेटर के बिहाफ में फाइल किया है, जिसमें मोर देन 250 तो ग्रांटेड है। तो ये जैसे मैंने कहा कि हम लोग डिफरेंट अटॉर्नीज़ के साथ काम करते हैं, कुछ अटॉर्नीज़ हमें प्रो बोनो सर्विसेज भी देते हैं। वी हैव फाइल्ड 8 पेटेंट इन USA ऑल्सो विद द प्रो बोनो सर्विसेज ऑफ वन ऑफ द अटॉर्नीज इन USA, और वो 8 में से करीबन 4 पेटेंट्स ग्रांटेड है। नेक्स्ट बैक जाओ। एक चीज़ यहाँ पे जो डॉक्टर साहब के प्रेजेंटेशन में नहीं थी, बट वो इट इज़ अ काइंड ऑफ ए IPR प्रोटेक्शन फॉर द प्लांट वेराइटीज़। उसके लिए देयर इज अ सेपरेट अथॉरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट्स। तो हमारे पास ऐसे भी इनोवेटर है कि जिसने अलग अलग नई किस्म बनाई प्लांट वेराइटी की, क्रॉप्स की, तो उसके लिए भी हमने काफ़ी सारे एप्लीकेशंस वहाँ पे फाइल किए हैं और उसमें से ग्रांटेड भी है। इसका मैं जस्ट एग्जांपल दूँ, आप लोगों ने सुना होगा कि पेप्सिको कंपनी और गुजरात के जो किसान जो पोटैटो की चिप्स के लिए लीगल बैटल्स हुई थी, तो वो जो पेप्सिको कंपनी की जो पर्टिकुलर FL 2027 वेराइटी थी, वो उन्होंने वो करके रखी थी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू वो हमारे किसान उसको प्रोड्यूस करके बेच रहे थे। तो उन्होंने क्लेम लगाया कि गुजरात के किसानों ने हमारी कॉपी की। देन काफ़ी सारा उसमें ओपोज वगैरह हुआ। अल्टीमेटली विद द इंटरवेंशन ऑफ फार्मर्स अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गुजरात गवर्नमेंट ने भी उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेके अल्टीमेटली उसको जो उन्होंने आरोप लगाए थे उसको विड्रॉ करना पड़ा, बिकॉज देयर इज अ प्रोविजन इन प्लांट वैरायटी अथॉरिटी जो PPVFRA एक्ट है कि उसके अंदर कोई भी किसान अपना बीज रिसर्च के लिए यूज़ कर सकता है, फार्मर्स टू फार्मर्स सीड को एक्सचेंज भी कर सकता है। तो ऑल दिस बिकॉज ऑफ द ऑल दिस प्रोविजंस फार्मर्स का राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए वो बेटल को वो पेप्सिको ने विड्रॉ करना पड़ा। नेक्स्ट, हाँ, हमारे काफ़ी बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ NIF काफ़ी सारे लगभग 8 इनोवेटर को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है कि जिनके पास कोई डिग्री नहीं। एवरी ईयर एक दो कवर होते हैं। और अभी रियल जो मेरा टॉपिक आ रहा है कि भाई जो साहब ने सिखाया और कवर किया कि भाई आइडिया से लेके पेटेंट, और मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा कि पेटेंट के बाद क्या। तो देयर इज ए केस स्टडी ऑफ स्टेप वॉकर। ये हम लोग अभी तो इंस्पायर है, इसके पहले हमारे पास एक इग्नाइट करके प्रोग्राम था। तो इग्नाइट में हम लोग ओपन एंट्री मंगाते थे कि कोई भी बच्चा, चिल्ड्रन अपना आइडियाज़ NIF को भेज सकता है। उस कंपटीशन में बिहार की एक प्राइमरी स्कूल की विद्यार्थी ने ये आइडिया हमें सबमिट किया। उसने देखा कि भी उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर वाला जो रूम है वहाँ रहते हैं, उनको सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही है। और आपने देखा होगा कि जो घर में हम लोग जो नॉर्मल वॉकर यूज़ करते हैं, जब एजेड पीपल भी करते हैं, ऑर्थोपेडिक इक्विपमेंट की तरह भी हमें लेना पड़ता है, तो उसके जो 4 पैर हैं वो फिक्स है, वो वॉकर लेके हम ये सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो उस बच्ची को जस्ट ये आइडिया आया कि कुछ होना चाहिए सो डैट उनके ग्रैंड पेरेंट्स को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की मूवमेंट इजी हो। ये आइडिया एक्सपर्ट्स को अच्छा लगा, उन्होंने आइडिया को सिलेक्ट किया और डॉक्टर कलाम के हाथों इसको हमने अवार्ड दिया। तो ये जब आइडिया ही था, उसने बस ये जो स्केच देख रहे हो वो स्केच एकदम, ये तो हमने आर्टिस्ट से बनवाया है, बट उसने ऐसा कहा कि भाई ये सीढ़ी पे चढ़ने का कुछ वॉकर होना चाहिए, यही आइडिया था और कुछ नहीं था।
उस आइडिया को फिर हमने सिलेक्ट किया, उसको रिकग्निशन मिला। नेक्स्ट, ये अवार्ड का फोटोज है। नेक्स्ट, अभी एनआईएफ का रोल शुरू होता है। नेक्स्ट, तो जैसे सर ने कहा कि भाई ये आइडिया है, अब इसकी पेटेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने प्रायर आर्ट सर्च किया कि भाई भारत में और बाकी जो कंट्रीज़ है उसमें क्या स्टेप वॉकर या ऐसा वॉकर की जो जिसके लेग्स में फ्लेक्सिबिलिटी हो वो अवेलेबल है कि नहीं है। प्रायर आर्ट करने के दरमियान कुछ कुछ वॉकर मिले, बट उसके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी या इस लड़की ने जो सोचा था वो प्रोविज़न नहीं था। नेक्स्ट, तो यूएस में मिले, कनाडा में मिले, इस सारी ये तो फोटोग्राफ से, बट इसकी जैसे सर ने कहा कि इसके क्लेम्स हम लोगों ने वेरीफाई किए कि प्रोटेक्शन अगर लिया है तो क्या है। कुछ वॉकर ऐसे भी है जिसमें बैठने की प्रोविज़न थी, स्मॉल सीट थी, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट, तो फिर हमने ये पूरी कंपैरिजन की, टेक्निकल एनालिसिस किया कि भी जितनी भी पेटेंट्स प्रायर आर्ट में मिली है उसमें क्या क्या इनोवेटिव फीचर्स है और उसमें से हमारे साथ कौन मैच करता है, कौन कैसे, हाउ वी कैन डिफाइन दिस आइडिया एज ए यूनिक। नेक्स्ट, ये सब वही है, इसमें मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट, इसके अलावा फिर हम लोग ने मार्केट बेंचमार्किंग भी किया, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भारत या बाकी इतने कंट्रीज़ के अंदर ज़रूरी थोड़ी है कि सारी प्रोडक्ट्स पेटेंटेड है, लोग पेटेंट फाइल नहीं करते। हमारे यहाँ तो बहुत अभी अभी शुरू हुआ है, लोग पहले तो बना के बेचना शुरू कर देते थे और एक बार जब मार्केट में प्रोडक्ट आ गया तो फिर वो ओपन सोर्स है, उसके ऊपर पेटेंट फाइल नहीं हो सकती। तो हम लोग जब अवार्ड देते हैं या हमारी इंक्यूबेशन वैल्यू चेन में जब उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये भी देते हैं कि इस तरह की प्रोडक्ट्स मार्केट में है या नहीं है। बहुत बार ऐसा हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है कि पेटेंट में वो वेबसाइट पे वो नहीं है, प्रायर आर्ट में नहीं मिल रही, बट उसी जिले में कोई और बना के बेच रहा है उसको। तो लोकल लेवल पे ये स्प्रेड हो जाता है। और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि जैसे सर ने कहा कि बहुत लोग आगे भी है तो पहले मैंने बनाया था, तो हाउ टू प्रूव कि भाई पहला कौन। तो हम लोग मार्केट बेंचमार्किंग भी करते हैं, तो इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हमें मिली, तो ये उसके फोटोग्राफ से उसकी कंपेरिजन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिर जब पहला प्रोटोटाइप, क्योंकि बच्ची को अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया, तो एक सिंपल सा बनाया कि भी एक पाइप के अंदर दूसरी पाइप को जैसे हम एक छेद लगा के फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, इस तरह से ये पहला प्रोटोटाइप बनाया और डिस्प्ले किया अवार्ड फंक्शन के दरमियान। नेक्स्ट, अब फिर प्रायर आर्ट के आधार पे और इसको वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए कि ताकि ये फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचे, उसके लिए स्कोप ऑफ द वैल्यू स्कोप बनाया कि भाई क्या क्या होना चाहिए। अब ये सिंपल से ही भाई स्टेप वॉकर अगर हमें बुजुर्गों को लिए देना है या आपकी फिजिकल इंजरी के लिए देना है, तो उसके अंदर लेग्स के अंदर अगर हम जो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं वो 100% ही होना चाहिए, उसमें कोई 19-20 नहीं चलेगा नहीं, क्योंकि उसमें किसी की लाइफ का स्टेक है। बुजुर्ग लोगों का विल पावर ऐसे भी कम होता है, एजेड लोगों का, तो वो डरते हैं कि भी ये हिल रहा है तो मैं नहीं यूज़ करूँगा। ऐसे ही जब ऑपरेशन हुआ है, नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो हम उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। फिर उसमें क्या क्या होना चाहिए, अगर बहुत हैवी हो गया तो भी दिक्कत है, लाइट वेट होना चाहिए, देन फोल्डिंग होना चाहिए। आजकल लोग फ्लाइट्स में या ट्रेन में आपको ले जाना है तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और इस तरह से वर्केबल फॉर द एवरेज स्टेप हाइट्स। जैसे ये तो स्टैंडर्डाइज हॉल है तो यहाँ पे स्टेप्स की हाइट आपको इवन मिलेगी, लेकिन जो बहुत जगह ऐसी जगह होती है कि स्टेप्स के जो हाइट्स होती है वो इवन नहीं होती, 1 इंच का आधा इंच का फर्क है। तो वो भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ को स्टडी करके एक स्कोप ऑफ द वर्क डिफाइन किया। नेक्स्ट, फिर प्रोटोटाइप 2 बनाया, प्रोटोटाइप 3 बनाया, सब अलग अलग मैकेनिज्म। लॉकिंग मैकेनिज्म इज द मेन एलिमेंट, इनोवेटिव एलिमेंट, कि कैसे इसको लॉकिंग किया जाए। फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, लेकिन जब लॉक हो तो ऐसा हो कि फिर वो जब तक फुल प्रूफ जो 100% सेटिस्फेक्शन वाली जो मैंने बात कही, तो अलग अलग मैकेनिज्म यूज़ हुई। सबसे ये प्रोटोटाइप 2 जो आप देख रहे हो उसके अंदर क्लच वायर का यूज़ किया गया था, एंड जो ऑटोमोबाइल में जो क्लच होता है, बट क्लच वायर भी टूट सकता है ना, तो फिर जब यूजर्स को दिया तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं आया। इस तरह से अलग अलग मैकेनिज्म ट्राई किया, फिर यूजर्स के साथ फीडबैक लिया कि भाई प्रोटोटाइप बनाने के बाद यूजर्स को दिया कि आपको ये कैसा लग रहा है, तो उनके फीडबैक लिए, उनके सजेशन जो अच्छे थे वो इनकॉर्पोरेट किए। नेक्स्ट, फिर P4 P5 सेम प्रोसेस,
सबके अंदर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट्स है। नेक्स्ट, ये जैसे P5 आप देख रहे हो, उसके अंदर क्लच वायर नहीं है, उसके अंदर जो गियर्स होते हैं उसके अंदर वी शेप के अंदर एक दूसरी चीज़ फंस जाती है, तो वो एक श्योरिटी आई कि भी हाँ ये क्लच वायर की तरह वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, फिर हमने ये सोचा है कि भाई हमारे इंजीनियर से वो चीज़ तो बन रही है लेकिन एस्थेटिक्स एंड मार्केटेबल प्रोडक्ट अभी भी 100% सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, तो एक प्रोफेशनल कंपनी को हायर किया। 3 लाख रुपये की फीस हमने पे की जस्ट टू डिज़ाइन दिस प्रोजेक्ट। लूमियम करके था, उन्होंने काफ़ी सारा काम किया है इसमें, एस्थेटिक्स तो आ गया। नेक्स्ट, उन्होंने भी कुछ चीज़ें सजेस्ट की। नेक्स्ट, बट उसमें हमें टेक्निकलिटीज़ में मज़ा नहीं आया, तो जो लूमियम कंपनी ने जो डिज़ाइन दी थी वो हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की, हम सेटिस्फाइड नहीं हुए। देन वी अप्रोच NIDs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो अहमदाबाद में है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लासरूम प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट को दिया गया। उन्होंने भी इसमें कुछ काम किए, पूरा टेक्निकल एनालिसिस किया, कुछ डिज़ाइन सजेस्ट किया। देन नेक्स्ट, उसमें भी दिक्कत आई कि ये उसका प्रोटोटाइप का फोटोज़ है जो NID ने डिज़ाइन सजेस्ट किया था, बट इसमें लाइट वेट वगैरह तो हो गया बट स्टर्डीनेस नहीं आई, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो इसको भी फॉर कमर्शियल प्रोडक्ट तक ले जाने के लिए वी हैव रिजेक्टेड दिस डिज़ाइन। नेक्स्ट, फिर हमने एक प्रोफेशनल कंपनीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा उसके बेसिस पे NIF की टीम ने एक फाइनल प्रोटोटाइप तैयार किया जो ऑलमोस्ट प्रीवियस ऑल प्रोटोटाइप से सुपीरियर था और एक ऐसा था कि भाई हाँ ये मार्केट में जा सकता है। उसके फिर कुछ 25 पीसीस बनाए हमने और यूजर्स को दिए हमने। नेक्स्ट, ये टेस्टिंग का फोटोज़ है, टेम्पल में एक एजेड व्यक्ति इसको यूज़ करता है। नेक्स्ट, और जैसे सर ने कहा कि जब ये काम हमारा ऑलमोस्ट हो गया कि भाई ये 80-90% हो गए, देन वी फाइल्ड ए पेटेंट एप्लीकेशंस, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन भी कर दिया हमने, पब्लिश भी हो गया और नवंबर 8, 2000 में ये हो गया और पेटेंट ग्रांट भी हो गया। नेक्स्ट, फिर हमारा बिजनेस डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ कि भाई प्रोटोटाइप बन गया, पसंद आ रहा है लोगों को, अभी इसको लाखों हज़ारों की संख्या में कैसे बनाएं। तो इनोवेटर तो स्टूडेंट थी यहाँ पे, उसकी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। NIF इज़ नॉट ए फुल टाइम बॉडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, तो ओनली ऑप्शन इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो हमने 3 डिफरेंट एंटिटीज़ को ये टेक्नोलॉजी की डिज़ाइन ट्रांसफ़र की। तो पहले महाराष्ट्र का एक छोटा सा स्मॉल एंटरप्रेन्योर था, उसको हमने ये दिया, बट समहाउ बिकॉज ऑफ सम पार्टनरशिप इश्यूज़ वो वेंचर इतना सफल नहीं रहा। फिर भारत सरकार की एक अलिमको करके बॉडी है जो फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए काम करती है और उनको भी विद द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी हमने ये टेक्नोलॉजी दी ताकि आप लोग बनाओ। ये भारत सरकार की बॉडी है जो व्हील चेयर वगैरह बना के लोगों को देती है। उन्होंने भी इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं किया और मार्केट में नहीं गए। देन हमने विस्को इज़ ए कंपनी जो ऑर्थोपेडिक इक्विपमेंट में मोर देन 60-70% मार्केट शेयर है उनका, उनको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की और उसमें कुछ अबाउट 5 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट एंड सम रॉयल्टी ऑन ईच यूनिट्स का एग्रीमेंट हुआ। और विस्को ने इसको फर्दर R&D किया, जो हमने जो डिज़ाइन दी थी उसको उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से किया, क्योंकि उनको ये भी देखना है कि भी किस चीज़ की डाई बनानी पड़ेगी, कैसे सस्ता पड़ेगा, कैसे लाइट होगा, व्हाट अदर फीचर्स दे कैन एड्स। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर विस्को ने भी करीबन 25 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और फिर फाइनली दे लॉन्च दिस प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। नेक्स्ट, ये प्रोडक्ट है जो विस्को ने मार्केट में लॉन्च किया और इसके अंदर मैग्नेटिक लॉकिंग मैकेनिज्म है और काफ़ी अभी ये अमेज़ॉन पे भी बिकता है और मार्केट में अवेलेबल है। करीबन 5000 पीस मार्केट में गए। अनफॉर्चुनेटली जब ये लॉन्च हुआ तो फिर कोविड आ गया था, तो 2 साल ऐसे ही उसमें वो चले गए। नेक्स्ट, ये इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं। नेक्स्ट, तो ये स्टार्टिंग से आइडिया से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक के एक जर्नी है। नेक्स्ट, इसका वीडियो जस्ट अलग से दिखा दीजिए। दिस इज ए लास्ट स्लाइड्स।
Durastep is the brand name. सिंपल एक बार क्लच दबाना है, 2 बार आपको शेड करना है। जब ऊपर जाएंगे तो एक बार आप हाइट एडजस्ट कर दीजिए, फिर वो लॉक हो जाएगा। फिर आप जब डाउन स्टेप करेंगे तब एडजस्ट करना है, ताकि फ्रंट लेग्स और रियर लेग्स का एडजस्टमेंट हो जाए। और फिर आप नॉर्मल सरफेस पे आ गए तो वो नॉर्मल वॉकर की तरह काम करता है। ये फ्लेक्सिबल है, फोल्डिंग करके ले जा सकते हैं कहीं पे भी, लाइट वेट है। और अभी ये प्रोडक्ट मार्केट में है और इनोवेटर है, उसको रॉयल्टी भी मिल रही है, डाउन पेमेंट भी मिल रहा। अभी वो हायर स्टडीज़ कर रही है इसके अंदर। तो ये दिस इज ए केस स्टडीज की एक आइडिया से प्रोडक्ट कैसे लिया। काफ़ी फिर जैसे प्रियंका चोपड़ा ने वुमेंस डे के दिन इसको इनोवेटर को रिकग्नाइज किया था। नेक्स्ट, थैंक यू। दिस इज ए स्मॉल The explanation really left us amazed by the clarity it had. We would now like to invite questions from the audience. To express our heartfelt gratitude, I request Dr. Narottam Sahu sir to present Dr. Mahesh Patel sir with a memento as a token of our appreciation and respect. As we come to the conclusion of this enriching program, we thank you all for your enthusiastic participation and valuable presence. I invite the project scientist to PIC GUJCOST, Dr. Jeel Patel ma'am, to deliver the vote of thanks. Good evening, all of you. Hope this session was up to your expectation. Both our experts have given their best over here, and the students, I think they have a lot of takeaway with them today. Fine. So, respected dignitaries, sir, madam, and esteemed speakers, all my colleagues and dear participants, on behalf of Gujarat Council on Science and Technology, it is my proud privilege to propose the vote of thanks for today's event. It's Let's Talk IP, IPR awareness for Viksit Bharat. The February session, the topic was From Idea to Patent, the Innovation Journey. And we celebrated this on International Day of Women and Girls in Science. Okay. First and foremost, let me express my sincere gratitude to Dr. Narottam Sahu, Advisor Sir, GUJCOST, for his visionary leadership, continuous encouragement and tireless efforts in conceptualizing and guiding the Let's Talk IP initiative. A very heartfelt thanks to Dr. Poonam ma'am for constant guidance and support. We are deeply grateful to Dr. Unnat Pandit sir, his trust, encouragement and continued support to GUJCOST in strengthening the national IPR awareness ecosystem. I'm very sincerely thankful to NIPAM, that is the National IPR Awareness Mission, and the Indian Patent Office for the collaboration and especially for deputing experts for each session. Mr. Jaiveer Singh sir, Mr. Aman Srivastav sir, Ms. Nabota, Dr. Abhishek Singh sir, all these are coordinating on behalf of the IP office with us to bring about this particular program. Then my special thanks to our distinguished speakers, Dr. Abhishek Singh sir, he is examiner from Patent Office Delhi, Mr. Mahesh Patel sir, for giving his precious time. He is from National Innovation Foundation, Scientist G, for sharing all their invaluable insights, the practical perspectives which were given by Mahesh sir for the development from patent to a product into the market,
and thus enriching the audience with their experience and knowledge. We truly appreciate the time and efforts for all of you have come forward, gathered for this event today. Now, we sincerely thank Kadi Sarva Vidyalaya for graciously hosting today's event. A lot of effort has been visible, sir. Again, a heartfelt appreciation for Dr. Gargi Rajpura ma'am, Honorable Vice Chancellor, for her support and cooperation for today's event. Thank you so much, ma'am. We also thank Dr. Divyang Dave, sir, Principal of Pharmacy College, Kadi University, for his support, and definitely Dr. Punit sir, for he's the IP cell coordinator from the Pharmacy College, and Kadi University was the very first to approach for hosting this particular IP talk over here, and we are very grateful for this initiative and dedication and the hard work you are showing over here. Now I extend my sincere thanks to all the IPCL coordinators. Apart from Kadi, the other coordinators, they have also registered the students over here, and they also be joining online. They have joined online with us. Then the IP officers from the different IP labs which are there in different districts, even they have gathered students and they are spreading IPR awareness. The CSC coordinators, which are there district-wise from the GUJCOST family, even they have spread the IPR awareness through this event. Through their Atal training lab, schools, all those things. Now, actively, okay, fine. Again, apart from this, we also have online registrations, which are from 15 different states, and the participants have been joining us virtually for this particular event. And the category of the participants, if you observe, they are starting from the grassroots innovators to students, researchers, startups, MSMEs. All category of participants are being visible in our last program also, and in this program also. Okay. So very heartfelt thanks to the participants for being a part of this particular IPR awareness initiative by GUJCOST and NIPAM mission. Now, a very special word of thanks for the appreciation of our PIC team who are they are working very hard to manage all these IP filings, and along with that the IP talk, which every month it will be conducted in coordination with the different IP cells, especially Mohin, Masuma, Dipen, Mehek, Maitri. Okay, all of them are present over here, and thanks for their hard work. Now, a special thanks to the IT team, particularly Bhavesh and Devansh. The video which was played showed the glimpses of the last event, particularly. जिन लोगों ने last event attend किया होगा, they would have seen themselves somewhere in the video. Okay, so that video was prepared by Devang. Thank you, Devang, so much. Now, again, I would also thank the entire GUJCOST family for direct and indirect participation and support for this particular event. Okay, now, lastly, but not the least, again, I would like to thank all the participants who have joined physically over here, the students which are over here. Definitely the time has been elapsed, and you have very patiently been waiting over here, but definitely there would be a good takeaway for you. I hope it was, the program gave you a sense of a motivation that how you can work with your research in the future. Okay, so thank you so much, all our physically present participants. Apart from that, those who are present on the Google Meet and also on the YouTube live video, thank you so much. Thank you for your time. This concludes today's Let's Talk IP session at IP Cell of Kadi Sarva Vishwavidyalaya, Gandhinagar. We hope the perspective shared today encourage you to continue innovating and embracing meaningful intellectual property practices. We now invite you to join us for high tea. A kind reminder to all participants, before leaving the hall, please ensure you have collected your belongings. Thank you.